वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ द अटेंडीज। थैंक यू हमारे साथ वापस से जुड़ने के लिए, जुड़े रहने के लिए। ऑल ऑफ द न्यू कमर्स, वी होप दैट दिस इज अ वेरी एंगेजिंग मास्टर क्लास फॉर यू। एंड ऑल्दो ये 2022 की लास्ट मास्टर क्लास है, वी हैव अ सीरीज ऑफ मोर informative and educational master classes coming up in the coming year as well, so stay tuned with us. Having said that, आज के main topic में let's dive right into it. Basically, this is a new feature that we are launching on the self-serve ads manager, which is language level audience estimator. And of course, this shall be available to, bigger agencies who operate for multiple brands at the same time, and individual self-serve users as well. Basically, Anushka, please, we can move to the next slide. Thank you. Yes. So why do we need a language level audience estimator on the platform as well? We'll go through the screenshots in a bit, but आप में से अगर कुछ लोग हमारे साथ already जुड़े हुए हैं, and if you have been using the self-serve platform, you would realize कि हमारी एक campaign level targeting होती है, जिसमें your demographics like your age, gender, location, and also advanced level targeting variables are present, जैसे कि content and in-market affinity, device price and age targeting, etc. तो ये सारे targeting variables एक campaign level पे based है and campaign level पे available है. Based on these options जो भी आप use करते हैं, we have an audience estimator already जो आपको day 7, day 30 and day 60 के numbers बताता है कि you can expect a potential reach of say X million users, unique users over this duration of time based on आपने क्या targeting variable select किया है. But that is at a campaign level. Now, when you move to the next step, which is the creative level, what happens is we have an additional option. जैसा कि सीमा भी बता रही थी, that ShareChat and Moch, they have very strong affinity towards vernacular first audiences, and the users also, they tend to relate the most to posts and to ads which are in their vernacular languages, right? So उसे reinforce करने के लिए हमारा creative level पे we provide an option to target for specific languages also. Now, these languages are the ones which audience or users have chosen as preferences on their particular ShareChat and Moch apps, right? Now, what happens कि आपने campaign level पे तो कुछ targeting variables select कर लिए and उसके basis पे आपको एक audience estimate भी मिल गया. But that assumes that you are targeting all of the languages. आपके language level filter only comes at the creative level. And हमारा जैसा infrastructure है, जैसा campaign creation process है, उसमें हम एक ही कैंपेन में अलाउ करते हैं आपको मल्टीपल क्रिएटिव्स डालने के लिए, विच मीन्स दैट आप एक कैंपेन लेवल पे ब्रॉड टारगेटिंग रख सकते हैं एंड यू कैन हैव मल्टीपल क्रिएटिव्स. ईच क्रिएटिव आप एक अलग वर्नाक्युलर लैंग्वेज में ऐड कर सकते हैं, लाइक द मीडिया एसेट कैन बी इन अनदर वर्नाक्युलर लैंग्वेज एंड यू कैन, आप फिर उस क्रिएटिव को उन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस के लिए टारगेट कर सकते हैं, प्लस उस क्रिएटिव का सीटीए भी आप उस पर्टिकुलर वर्नाक्युलर लैंग्वेज में लिख सकते हैं. तो इससे हम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, थोड़ी एजिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप एक ही कैंपेन को लेके, लाइक एक ही बार पूरा कैंपेन सेटअप करके मल्टीपल क्रिएटिव्स के साथ अपना कैंपेन का रीच कैसे बढ़ा सकते हैं. बट व्हाट हैपेंस हियर इज आपका, सॉरी अनुष्का, कुड यू प्लीज गो बैक टू दैट स्लाइड? यस, आई जस्ट रैप दिस इन अ बिट. सो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली आप कैंपेन लेवल पे आपको एक ऑडियंस एस्टिमेट मिल जाता है, बट क्रिएटिव लेवल पे इट इज डिफिकल्ट टू गेज. अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म पे हम क्रिएटिव लेवल पे नहीं दिखा रहे थे कि क्या पोटेंशियल रीच है. तो आपका परसीव्ड रीच ऑफ योर कैंपेन एंड एक्चुअल रीच डिफर्ड, क्योंकि आपके क्रिएटिव लेवल पे और भी लैंग्वेजेस है. सो दिस इज वेयर द लैंग्वेज लेवल ऑडियंस एस्टिमेटर कम्स इन. इट गिव्स यू अ रियल टाइम व्यू ऑफ योर टारगेट ऑडियंस एट अ लैंग्वेज लेवल. मतलब कि ईच क्रिएटिव लेवल पे भी आपको एक रियल टाइम व्यू मिलेगा कि अच्छा पोटेंशियल टारगेट ऑडियंस साइज क्या है based on the languages that I have selected as well. Then एक बहुत important trend है with respect to click-through rate or CTR, which is a very important metric in performance advertising, right? Basically, it tells you that कितनी बार आपके ad पे click किया, out of the number of times it has been viewed or the number of impressions we have delivered for a particular ad, how many times did some audience already actually click on that particular ad. Now, this also depends on how engaging the creative is, how relevant the creative is, how incentivizing the creative is. And this in turn depends कि उसका match कितना है with the audience whom it was shown to. So that will be again based on language and the vernacular
that has been used in the media asset itself. Thus, कई बार क्या होता है, एक ही कैंपेन में अगर आपके 5 क्रिएटिव्स हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, तो you can observe a different CTR trend, and that also helps you analyze कि अच्छा maybe this language cohort or this language की audience has a high affinity towards my brand or my product or my service as compared to other languages. It helps you derive really good insights at a language level as well, and you can then fuel more money towards the creators and towards the language cohort which is working for you. And of course, as I mentioned, this estimator is a tool to bridge the gap कि आपके campaign level पे बहुत broad targeting है, but at an individual creative level and across all of the creatives that you have set, क्या आपने अपने campaign को अच्छी तरह cover किया है या नहीं? So yeah, that was the intent of the language level audience estimator. We can move on, Anushka. Right. So what are the key highlights of this particular tool? It aids in understanding how to expand the reach of creatives across various audience niches. So very soon we'll see screenshots, but the idea is हम सिर्फ आपको audience level estimate नहीं बता रहे हैं. Along with this, we are also telling you that आपने campaign level पे मान लीजिए 100 million का, for example, there's a potential reach, right? Then you added 5 creatives to your campaign and you targeted different languages with all of these creatives. Now, across these creatives, like a sum total of all of the languages and targeting that you have done, maybe you are able to get a reach of 80 million, which means कि आपने अपने campaign level के basis पे या campaign level के comparison में 80% audience cover कर ली है with the kind of creatives you've already added. Having said that, there is also a scope of 20% additional audience को cover करना with creatives. So either that could be a language that you have missed out in your targeting, or a type of sort of creative like that can help you make this entire campaign very holistic. तो इस टूल से आपको ये पता चलेगा कहाँ पे opportunity है, कितना gap है, and how much you need to cover with your creatives as well. Now, obviously, it also enables understanding potential versus actual reach analysis at a creative level. तो आप में से जो veteran users हैं ShareChat Ads के, उन्होंने देखा ही होगा कि हमारे पास campaign and creative level analyze option होता है हमारे manage campaign page पे. That tells us which are the top performing states, top performing cities. It tells us which gender, age, and geography is working for us. And also what is the potential reach, मतलब कि unique reach, कितने unique users को हम reach कर पाए, and delivery. So basically that helps us understand कि कितने unique users थे और उसमें से कितना proportion was of repeat users, right? So with this language level estimation, we will also be able to understand at a creative level कि अच्छा अगर potential reach इतनी थी और delivery काफी कम हुई है, what is the reason behind the same? Is there a particular creative which is not, or language which is not working out for us, and how we can improve the targeting or the settings of our campaign? The third point we've already discussed, that it addresses the gap between campaigns overall reach and individual creatives reach as well. In fact, why we've reiterated this is हमारे ads manager पे there is a capability to link existing creatives to newer campaigns as well. तो ऐसा नहीं है कि आपको एक क्रिएटिव बार बार सेटअप करना पड़ेगा अक्रॉस डिफरेंट कैंपेन्स. मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर कैंपेन में पैन इंडिया टारगेट किया है एंड उस कैंपेन में आपने 10 क्रिएटिव्स ऐड किए हैं. यू हैव हैड अ गुड कवरेज अक्रॉस ऑल लैंग्वेजेस. वो 10 क्रिएटिव्स मल्टीपल वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में हैं और मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए टारगेटेड भी है. नाउ यू वांट टू चेक कि क्या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको बेस्ट ROI दे रहा है फॉर योर ब्रांड. सो हो सकता है आप एक और कैंपेन सेटअप करें and उस कैंपेन को आप ज्योग्राफी लेवल पे भी रिस्ट्रिक्ट कर दे, दैट ओके वी ओनली वांट टू टारगेट से साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया. तो ऐसे आपने अलग अलग कैंपेन्स बना दी और उनमें आपने यही एग्जिस्टिंग क्रिएटिव्स लिंक भी कर दिए. So this language level estimator also helps you understand कि अच्छा कैंपेन के ओवरऑल लेवल प्लस आपके लैंग्वेज लेवल selections के basis पे what is the potential reach, and this can also help you analyze which combination of geography and language is also working for your brand and for your services, right? And इससे ही derived है कि हम different CTR patterns जो है across creatives and across different campaigns as well, वो हम कैसे analyze कर सकते हैं और कैसे better targeting set कर सकते हैं both at a campaign and creative level. We can go to the next slide. Yes, so now we'll go through a few screenshots जिस पे हमें पता चलेगा कि ये tool actually दिखने कैसे वाला है on the platform.
And right now, today, it is not live on the platform, but very soon, like in the coming week, we will have it deployed. So आपके पास opportunity होगा to go and experience it for yourself. Right. So सबसे पहले the screenshot on top left, that is the screenshot of a step 2 at the campaign level. तो ये campaign level की overall target audience हम set कर रहे हैं. यहाँ पे आपको age, gender, geography, advanced targeting like content, in market, device, price and age, ऐसी सारी targeting options available हैं. Now यहाँ जो आपको दिखेगा forecasted results में, that is your campaign level potential reach. वहां पे हमने ऑलरेडी एक नोट भी ऐड कर दिया है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस एज वेल, दैट यू नो दिस इज द रीच एट अ पोटेंशियल रीच एट एन ओवरऑल कैंपेन लेवल, बट आपका एक्चुअल रीच विल डेफिनेटली डिपेंड ऑन द लैंग्वेजेस दैट यू सिलेक्ट एट अ लेटर स्टेज. व्हाट इज दैट लेटर स्टेज? इट इज द क्रिएटिव स्टेज, जो हम बॉटम राइट स्क्रीनशॉट अब देख सकते हैं, द सेकंड स्क्रीनशॉट ऑन द स्लाइड. So that brings us to the manage creatives page or the step 3, जहां पे हम क्रिएटिव्स ऐड करना स्टार्ट करते हैं इन अ पर्टिकुलर कैंपेन, राइट. तो इसमें अब आप राइट में देख पाएंगे कि अभी तक मैंने कोई क्रिएटिव ऐड नहीं किया है इस कैंपेन में, आई एम जस्ट सेटिंग इट अप, राइट. तो इट टेल्स मी कि ये जो पोटेंशियल टारगेट ऑडियंस साइज है, दैट्स ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द कैंपेन लेवल टारगेटिंग एंड इट अज्यूम्स कि मैं सारी लैंग्वेजेस टारगेट करूंगी. दैट इज व्हाई द नंबर इज द सेम ऑन स्टेप 2 एंड स्टेप 3 टिल नो क्रिएटिव्स आर एडेड एंड नो लैंग्वेजेस एडेड इन दोस क्रिएटिव्स. It also then says कि please add creatives and just wanted to highlight one thing कि language level targeting करना compulsory नहीं है, but as Seema also mentioned that vernacular creatives work brilliantly well on our platforms and they have a very high engagement rate. So it's always advisable कि आप थोड़े custom creatives, custom media assets बनाए to target particular audiences, right? तो अगर आप language level टारगेटिंग सिलेक्ट नहीं करते हैं तो हमारा एल्गोरिदम अज्यूम करता है कि यू वांट टू टारगेट यूजर्स इन ऑल लैंग्वेजेस, राइट. सो दस देयर इज नो डिफरेंस देन इन योर क्रिएटिव लेवल वर्सेस योर कैंपेन लेवल रीच. बट अगर आपने कोई लैंग्वेज लेवल टारगेटिंग ऐड किया है, then what happens is there comes a gap, right? So this particular note on creatives page says that please add creatives, and if you add language targeting therein, we will be able to show you a refreshed number of what is the potential reach of your campaign and creatives now. उसके नीचे आप एक देखेंगे, just for your reference, we have also provided, you know, a drop down कि हम across जो भी language targeting हम allow करते हैं, जो भी language के audiences हमारे platform पे available हैं, उनमें what is the potential audience size. मतलब दिस इज जस्ट आपके रेफरेंस के लिए कि यू नो फ्यूचर में या फिर अगर आप अभी भी अपना कैंपेन आपने फाइनलाइज नहीं किया है तो यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड मॉडिफाई बेस्ड ऑन विच लैंग्वेजेस हैव हायर ऑडियंस साइजेस एंड आपका कहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट फिट अच्छे से बैठ रहा है. सो दिस इज जस्ट अ रेफरेंस बेसिस के लिए, लाइक एन इंफॉर्मेशन ड्रॉप डाउन फॉर यू विच गिव्स day 1, day 7 and day 30 reach across various languages that we offer. And please note one thing कि ये जो reference numbers है, they are at a platform level, right? So they are not considering कि आपने campaign level पे क्या targeting select किया है. ये बस आपके information के लिए है कि in general platform पे various languages के क्या audience sizes हैं. जो नंबर आपको ऊपर दिख रहा है widget में above the blue note, that is the number which tells you the potential reach of your campaign at any point in time. We can move ahead, Anushka. Right. Now, this is the next stage wherein say you added a couple of creatives to your campaign. आपने कुछ creatives add कर लिए हैं और जैसा आप देख सकते हैं top left screenshot में एक column added है language का, which shows you a summary कि एक हर creative के against आपने almost कितनी languages target किए हैं. तो हम उसमें देख सकते हैं हिंदी है, पंजाबी है, किसी में हिंदी +2, मतलब कि हिंदी के साथ 2 और languages भी targeted है, etc. Right? तो ये सारे creatives अब आपके campaign में है. Now आप देखेंगे तो आपको widget में number changed दिखेगा, right? And there are a couple of elements in that particular widget that have appeared now. So what happens is, one, हम across all creatives आपका एक super set of languages लेते हैं. मान लीजिए आपने इतने सारे creatives add किए, उसमें कुछ में आपने हिंदी add किया है only, and कुछ में आपने हिंदी and पंजाबी add किया है. Further, कुछ creatives आपने सिर्फ पंजाबी के लिए target किए हैं. तो हमारा एल्गोरिदम क्या करेगा, we'll only pick up, you know, हिंदी once and पंजाबी once. हम डबल काउंटिंग नहीं करेंगे ताकि आपको एक ट्रू व्यू मिले. तो बेसिकली नाउ दिस 44 million number is what? 44 million number is the potential reach of your campaign, including
द रीच ऑफ ऑल ऑफ योर क्रिएटिव्स, कि अक्रॉस क्रिएटिव्स आपने कितना कवर कर लिया है अपना पोटेंशियल कैंपेन का ऑडियंस साइज, राइट। एंड अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन बार भी है विच शोज यू like we have different levels. So if this bar or if this ratio is 0 to 40%, it means कि आपने अपने creatives को आपने बहुत कम creatives ऐड किए या फिर आपने बहुत कम languages को टारगेट किया है, तो आपके कैंपेन के पोटेंशियल ऑडियंस वर्सेस आपके क्रिएटिव के पोटेंशियल ऑडियंस में बहुत फर्क आ चुका है. एंड देयर इज इमेंस स्कोप ऑफ आइदर एडिंग मोर क्रिएटिव्स इन वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस or adding more languages to the targeting of your existing creatives. So 0 to 40% का मतलब है you should definitely add more creatives or more languages to your creatives, right? Then 40 to 70 means medium coverage. मतलब कि आपने अपने campaign के potential के comparison में around 40 to 70% target cover कर लिया है अपने creatives और language targeting के साथ. And anything above 70 is healthy, that आपने बहुत decent coverage maintain किया है with your campaigns and your language level targeting as well. When it comes to the creatives. So, if it is below 40%, if it is 0 to 40, then it will give you a red bulb and a red indicator. If it is between 40 to 70, it will give you an orange bulb and orange indicator. And if it is above 70%, it is basically just giving you a thumbs up that, kudos, and आपने बहुत अच्छा coverage किया है, 70% plus है आपका creative के across coverage as compared to your campaign. So you're good to go. You can expect कि आपके campaign और आपके creatives के reach, potential reach में combination में बहुत अंतर नहीं होना चाहिए. So that is what the purpose of this percentage bar is, to get you to understand the proportion कि आपने कितना coverage maintain कर लिया है, right? And अगर आपका green नहीं है, मतलब कि आपके पास scope है, if it is below 70%, तो हम आपको एक opportunity या एक bulb icon दिखाते हैं at various stages. Two of those stages are, एक जो आप बॉटम राइट स्क्रीनशॉट देखेंगे, उसमें लेफ्ट पैनल में जो आपका कैंपेन क्रिएशन प्रोसेस है, उसमें आपको हमेशा क्रिएटिव लेवल पे एक बल्ब दिखेगा कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इस कैंपेन का रीच इंप्रूव करने का बाय एडिंग मोर क्रिएटिव्स और मोर लैंग्वेजेस टू योर एग्जिस्टिंग क्रिएटिव्स. एंड राइट साइड में भी आपको उस विजेट में दिखेगा कि लिसन, देयर इज स्टिल एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज द कवरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंपेन अक्रॉस क्रिएटिव्स. Anushka, we can move to the next slide. Right now, there are a couple more junctions wherein हम आपको remind करने के लिए try करते हैं that you should add more targeting variables, more language targeting options to your creatives. One of them is जब आप campaign submit करने जाते हैं, that is like the last stage where you can edit the campaign before it goes into approval. तो हम वहां पे भी आपको वापस से opportunity दिखाते हैं that look, there is a chance to still go back and edit the targeting. Even if you decide कि चलिए आपको तब नहीं करना है, you can always, once the campaign is live as well, you can always go back and keep editing the targeting and coverage to see कि किस पॉइंट पे आपका कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर अच्छे से कवर कर रहा है, रीच बढ़ रही है उसकी, राइट. एंड हम आगे भी कवर करेंगे दैट अर्लियर वी हैड इंट्रोड्यूस्ड बिड सजेशंस आल्सो. तो ये लैंग्वेज लेवल ऑडियंस के साथ साथ आपको बिड सजेशंस भी आपके सबमिशन पे मिल जाएंगे. Now on the leftmost on your screen, you will see the exact description जो मैंने अभी बताया कि low user base, average user base and healthy coverage क्या होता है of your creatives as compared to your campaigns, right? So anything between 0 to 40 is low, 40 to 70 is medium or average, and above 70 is what we recommend, that you should have a healthy user base coverage with your creatives, right? And on the rightmost on the screen, you will see कि हमने अभी तक बात की कि हमारे कैंपेन लेवल पे या स्टेप 2 पे हमारा एक एस्टिमेटर है, हमारे स्टेप 3 पे विच इज क्रिएटिव्स, ओवरऑल मैनेज क्रिएटिव्स वाले पेज पे उस टेबल के साथ एक विजेट है. नाउ वी ऑल्सो हैव दिस केपेबिलिटी इनसाइड अ पर्टिकुलर क्रिएटिव. तो आप एक इंडिविजुअल क्रिएटिव भी जब ऐड कर रहे हैं या फिर जब एडिट कर रहे हैं, तो आपको उस इंडिविजुअल क्रिएटिव के लैंग्वेज टारगेटिंग के बेसिस पे भी राइट हैंड साइड बॉटम में एक पोटेंशियल रीच दिख जाएगा. इसमें हमने परसेंटेज नहीं ऐड किया है क्योंकि ऑब्वियसली हो सकता है आपके कैंपेन का रीच 100 मिलियन हो पर आपने उस कैंपेन में 20 क्रिएटिव्स ऐड किए हो एंड इंडिविजुअली उन क्रिएटिव्स की रीच 4 मिलियन ही हो, बट अक्रॉस ऑल क्रिएटिव्स उन क्रिएटिव्स की रीच 80 मिलियन हो जाती है. सो दैट इज अ ब्रिलियंट थिंग, राइट. तो इसलिए हमने इंडिविजुअल क्रिएटिव लेवल पे आपको परसेंटेज नहीं बताया है, हमने अक्रॉस ऑल क्रिएटिव्स मैनेज क्रिएटिव पेज पे आपको परसेंटेज लेवल बताया, सो दैट आप एक इन्फॉर्म्ड एंड मीनिंगफुल डिसीजन ले सके.
इंडिविजुअल क्रिएटिव लेवल पे हमने बस आपको उस क्रिएटिव के लिए बताया कि अगर आपने इसमें सिर्फ हिंदी टारगेट किया है तो इस क्रिएटिव प्लस आपके कैंपेन की टारगेटिंग लेते हुए पोटेंशियल रीच इस पर्टिकुलर क्रिएटिव की क्या हो सकती है, राइट? सो या दैट्स द आइडिया। सो दैट मतलब उसके साथ हमारा ये लैंग्वेज लेवल ऑडियंस एस्टिमेटर का डेमो खत्म होता है। As I mentioned, this shall be deployed on our platform in the coming week. तो मैं request करूंगी that please go and experience it on your own. In fact, it is not even necessary to take a campaign live in order to experience this. पर आपके पास अगर multiple languages में creatives हैं या एक ही creative है, आपको just experiment करना है to see कि किस level पे हमारा reach change हो सकता है with additional language level levers as well. I would suggest कि आप please जाके इसको एक try दीजिएगा. With this, I think we move to the next segment of our masterclass today. And as mentioned earlier, ये masterclass इस साल की last masterclass है. So we would like to talk about, the top 3 product features that we have released during this year and that, have brought us significant gains and जिसने हमारे platform को एक level से entirely next level पे पहुंचा दिया है. So, yep. The first of these features being the ShareChat Ads Business Center. Now, I hope अगर आप में से किसी ने ये वाली मास्टर क्लास भी अटेंड की थी पहले, so this is basically catering to medium to large media houses जहाँ पे आप multiple brands के लिए advertise करते हैं through a single login, या फिर आप एक sort of freelancer है जो multiple brands के लिए advertise करते हैं, या फिर एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो मल्टीपल यूजर्स ऐड करना चाहते हैं अपने बिजनेस सेंटर में। बेसिकली हमने ये क्यों इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज अर्लियर हमारे इंडिविजुअल सेल्फ सर्व अकाउंट से आप एट अ टाइम एक ही ब्रांड मैनेज कर पाते थे, एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ यू आर वेटरन एडवर्टाइजर्स and we have industry benchmarks जहाँ पे other platforms do allow you to advertise for multiple campaigns at the same time. आपको एक ही लॉगिन में मल्टीपल कैंपेन्स को एनालाइज करने का ऑप्शन चाहिए। आप अगर एक ही वॉलेट मेंटेन करना चाहते हैं बिकॉज वी आर अ प्रीपेड प्लेटफॉर्म, तो आप उसी वॉलेट से मल्टीपल ब्रांड्स के लिए कैंपेन्स के लिए फंड्स ऐड करना चाहते हैं। सो दैट वाज द मेन सेंटिमेंट बिहाइंड एडिंग दिस पर्टिकुलर फीचर टू आवर प्लेटफॉर्म। इट्स नॉट एक्चुअली अ फीचर, ये एक सेपरेट प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर है। If you are an agency type of a client, a big brand, or a freelancer who works with either multiple brands or multiple users managing these brands, then please reach out to Seema and her team, and they will be more than happy to set up, your multi-brand account, which is nothing but this business center, right? What it does, it helps you create multiple campaigns, manage and analyze those campaigns across multiple brands. It also helps you create multiple reports across these brands. It gives you more control over your billing and your associates access management. मान लीजिए आपकी कंपनी में 4 लोग हैं. One is an expert in implementing pixels and postbacks. The second is an expert in generating and analyzing campaigns. And the third person is an expert in, setting up the initial campaign and structuring those. तो आप इन सब के लिए at an individual brand level access manage कर सकते हैं कि मुझे पर्सन ए को ब्रांड 1 and 2 के ये मॉड्यूल्स का ही एक्सेस देना है. सो दैट लेवल ऑफ परमिशन एंड एक्सेस हैंडलिंग इज आल्सो सपोर्टेड ऑन आवर प्लेटफॉर्म. आप इन यूजर्स की एक्सपायरीज भी सेट कर सकते हैं एंड आप एंटायर ब्रांड के कैंपेन मैनेजमेंट को एक ही लॉगिन से मैनेज कर सकते हैं. इनफैक्ट फॉर बिगर ब्रांड्स दिस ऑल्सो गिव्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड रीअश्योरेंस. क्योंकि मान लीजिए आप एक एजेंसी है एंड आपने एक बहुत बड़े ब्रांड के लिए रिक्वेस्ट किया, तो हम आपसे ये भी कहेंगे कि प्लीज give us a confirmation from that brand's end that yes, you have been authorized by that particular brand to advertise on their behalf. इससे क्या होता है, एक sense of authenticity establish होती है. The brand is also relieved that okay, this is going through a proper verification flow and they have control over who can manage their profiles and their campaigns on ShareChat and Mod. ShareChat and Mod are really big platforms today and they have immense impact on tier 2 and onwards audiences, right? In fact, even tier 1 these days. So brands are really conscious कि यार हमारे behalf पे कौन advertise कर रहा है, हमारी profile पे कैसी posts दिख रही हैं. So for brands as well, this is a very foolproof and secure system to let advertisers advertise on their behalf. Right, and in the interest of time and without going further into details, I would just like to say that again, this can be used by agencies, by big brands, by freelancers, and please feel free to reach out to our team to request for these accesses. Of course, Anushka shall be sharing this PPT across with all of us, so you can go over the details
on your own time as well, right? So this is just a glimpse of the business center. कैसा दिखता है? Left hand side में आप देखेंगे top पे एक drop down है to talk about the various brands that you have added in your business center, right? And bottom right में आपका जो admin होगा business center का, who sets up this entire account, that admin has the ability or the access to add more users to this. And जैसा कि मैं कह रही थी, for each associate or for each user that you add, you can manage at a brand level कि आप इस brand के लिए कौन से modules का access उस particular person को देना चाहते हैं. आप उनकी expiry date edit कर सकते हैं, that if they're about to leave the organization in say another 4 months, then you can automate their withdrawal of their access by setting that expiry. Right. And this is of course a page that talks about the various brands. How do you request for a brand, the various statuses? And if suppose, you no longer want to be associated to a particular brand, then you can cancel the invite as well. आप अपने personal reference के लिए brand name वगैरह edit कर सकते हैं. And of late, we've actually also introduced, new features which will soon be reflected into the platform again in the coming week. जहाँ पे आप एक particular brand का उनका ब्रांड प्रोफाइल इमेज क्या है, ब्रांड प्रोफाइल नेम क्या है, वो व्यू कर सकते हैं. इफ इट इज एन ऐप बेस्ड ब्रांड, तो आप उनका ऐप पैकेज भी उधर एडिट कर सकते हैं. अगर ऐप अपग्रेड हो गया है, पैकेज चेंज हो गया है और समथिंग, then you can always edit those things via this module as well. Right. This brings me to the next big feature that we have released this year. इसका masterclass हमने recently ही किया था. But this has brought huge gains to us and huge aid to the advertisers as well. So I'd like to talk about it. This is nothing but the intelligent bid suggestions module. Again, this is a part of the opportunities only जो हम आपको दिखाते हैं at various levels, right? जैसे अभी मैंने एक language level audience estimation की opportunity की बात की. So अभी मैं एक intelligent bid suggestions की opportunity की बात करना चाहती हूँ. So now, as Seema had mentioned earlier, that our platform allows you immense flexibility when it comes to setting your campaigns. We are not saying, of course, we have some minimum healthy budgets that you require for a campaign to go live, but we give you full liberty as to what bid you want to suggest. मतलब कि अगर आप नए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, आपने फर्स्ट टाइम ShareChat Ads ट्राई किया है एंड आप स्टार्ट करना चाहते हैं एक ₹6 CPC बिड के साथ and a 5,000 daily budget, right? So based on your business category, based on the ad format and the media asset that you have selected, and based on your campaign objective, we will tell you whether that bid is healthy, whether that bid, is not sufficient, or whether that bid is most likely not going to help your campaign succeed. So the idea is we want you to be more prepared as you complete the initial setup of your campaign as well. Of course, we have a team, who monitors the performance of your campaigns as well. While you do that using reports and analysis modules, we also keep track of your campaigns. So if there is something fundamentally wrong, we will reach out to you. But we don't want you to lose out on those initial golden days or golden period of learning and the cold start phase of your campaigns. इसलिए हम चाहते हैं कि हम आपको जितना independent and autonomous बना सके with these suggestions, हम आपको उतना well informed बनाएं. So these suggestions tell you whether the bid that you have input is healthy, average, or it is unhealthy and will not allow your campaigns to scale. In fact, अगर आपको नहीं पता कि what bid should you start with, we have a bulb icon which actually tells you that this is a bid that you should definitely go ahead with, especially in the initial phase of your campaign. And obviously, as is the case with other settings in our campaign management, campaign creation, इस setting के साथ भी कोई hard and fast rule नहीं है कि आपने जो initial setup में कर दिया, that is set in stone. You can always go back and edit the settings, edit the bids as per the performance of the campaign. And what is beautiful about this particular module is कि हमारे platform पे, of course, there are new advertisers जो हर दिन आते हैं, right? We have hundreds of advertisers running thousands of campaigns at the same time. A lot of them go live one day later, etc. So basically, dynamics of the platform are changing by the minute. As I'm talking to you, the entire bid scenario of the ads platform might be changing or evolving. And in order कि आपकी campaigns still relevant रहे, आपके bid values still relevant रहे and still competitive enough रहे for your campaigns to scale and win the auction system, हमारा recommendations engine basically modifies these bids at a very short periodic level.
and it always keeps getting refreshed, right? तो ऐसा नहीं है आपके initial setup के time पे अगर X bid आपको healthy बताया था तो आज भी वो ही stale suggestion रहेगा, not at all. आज का suggestion आपका will be, you know, catering to today's dynamic of the platform, and that is most important for performance marketers who use self-serve, क्योंकि उनके लिए इस इंफॉर्मेशन का सोर्स सिर्फ सिस्टम ही हो सकता है, उन्हें कहीं एक्सटर्नली नहीं पता चल सकता कि किस बिड पे उनका कैंपेन अच्छे से परफॉर्म करेगा. So the key highlight over here is also that we give you a chance to revise the bids even after your campaign has gone live. And मान लीजिए सेटअप के टाइम पे आपका कैंपेन का बिड हेल्दी था, बट 4 दिन बाद वो बिड अब कंपेटिटिव नहीं रहा, तो हम आपको ओवरव्यू पेज पे ही दिखा देंगे दैट लुक दिस कैंपेन हैज अ स्कोप ऑफ इंप्रूविंग इट्स स्केल बिकॉज आपका बिड हेल्दी नहीं है. सो यू नो दिस रेपिटेटिव और दिस रेकरिंग चेक helps you maintain the health of your bids and your campaign scale, right? And of course, sorry, Anushka, could just go back to the previous slide once. And yeah, I've tried to cover most of these. Another point I'd like to talk about is the multiple junctions जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि opportunity है. आप जैसे ही लॉग इन करते हैं आपके एड्स मैनेजर पे आपको ओवरव्यू पे दिख जाता है, आप अपने कैंपेन्स को देखने के लिए कैंपेन मैनेज पेज पे जाते हैं, आप इंडिविजुअल कैंपेन को एनालाइज करने के लिए एनालाइज पे भी दबाते हैं तो उधर भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगा if there's a chance of improving the bid of a particular campaign, and it also is there present throughout the campaign creation and editing flow. And जब आप कैंपेन को लॉन्च या सबमिट करते हैं तब भी हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं. Right, we can move to the next slide, Anushka. So yes, this is how the entire recommendations bit looks, right? जैसे ये campaign creation का process है, and this is step 2 जहाँ पे हम budget and scheduling set करते हैं. This is the place where you actually get to input the bid that you want, and obviously based on the various business models, अगर आपका CPM होगा तो CPM will be the bid that you will give. If it is a CPC, then so on and so forth. So yeah, if you see in the screenshot over here, bid CPM field में 40 has been input as a value, right? So it tells you that the average bid value on the platform is above 63 rupees. So it tells you that, okay, you are far away from what the average is even. So it's very likely that your campaign won't scale, right? And you will lose out on those golden cold start phases wherein your campaign can learn and scale really quickly. Thus, we tell you that, look, this looks like a low bid. We would strongly recommend to go with a bid value that is healthy. And thus 100 is what we are suggesting. You can either apply it or you can still go ahead and submit. हम आपको submit करने से मना नहीं कर रहे हैं. You can always go ahead and submit your campaign, but be wary that it might not get the scale that you are anticipating क्योंकि आपकी bid competitive enough नहीं है. Right. Again, these are the various touch points where we remind you that, look, your bid is still not competitive enough. अगर आपकी bid healthy होती है, which means that we give you a green signal, then well and good, nothing to worry about. But if it is red or orange, that is to warn you that, okay, you still have the opportunity to, you know, please go ahead and change your bids. Right, and these screenshots actually tell you about the drop down that you see as soon as you enter the platform. Either overview page पे, manage campaigns page पे, analyze page पे भी आपको top campaigns दिख जाएंगी which have the opportunity to improve you know, your bids. And now जो ये language level estimate वाला suggestion आएगा, this will also be incorporated in these 2 drawers, right? Like the top drop downs that we have. तो इसमें आपके पास bid suggestion वाली campaigns भी होंगी, and इसमें आपके पास language level estimation के suggestions के साथ भी campaign के recommendations होंगे, that, you know, these campaigns have this particular opportunity for you to improve scale and coverage. Right. So last but not the least, I mean, of course, you know, हमने over the course of this year काफी सारे नए features launch किए थे, and we've only picked up the top 3 here. But Merge ad format is something that we would really like to talk about. Seema already talked about the brilliant advantages and the, you know, enriching sort of audience that Merge unlocks for all of us. So I'd just like to talk about the fact that we also offer the opportunity to advertise on Merge via this same ads platform itself. Of course, इसके लिए एक basic requirement जरूर है that you need to have video creatives. And you know, with our offers that are going on, अगर आप 50,000 के above load करते हैं आपके wallet में at any point in time, we are more than happy to provide you support with video creatives as well. Like, we will have our in-house experts develop some really custom, bespoke, and well-suited
वीडियो क्रिएटर्स फॉर योर ब्रांड, प्रोडक्ट एंड बिजनेस कैटेगरी, एंड हम आपको वो भी सप्लाई करेंगे, right? So I would definitely recommend that reach out to Seema and her team, or reach out to us via email and tell us that you're interested in targeting audiences on Moj. All you need is a video creative. If you don't have that, please go ahead and load your wallet with 50,000 or above, and we are more than happy to supply a video creative free of cost for you too. And Moj पे हमने definitely brilliant CTRs, brilliant conversion rates observe किए हैं. And it is not like कि either or, कि आप सिर्फ या तो शेयर चैट पे करेंगे या मॉज पे करेंगे. If you think about it, the kind of diversity or the range of audience that is offered across ShareChat and Moj is brilliant. मतलब उसका coverage बहुत अच्छा है. तो आप अपने ब्रांड के लिए स्लाइटली डिफरेंट क्रिएटिव्स के साथ, या फिर आप ट्राई कर सकते हैं सिमिलर क्रिएटिव के साथ भी, दोनों एप्स को टारगेट करके यूनिक सेट ऑफ ऑडियंस अनलॉक कर सकते हैं. ओवरलैप is like overlap is not significant, and that gives you the opportunity कि आप यूथ के साथ भी एक्सप्लोर करें कि आपका ब्रांड कैसे एंगेज कर रहा है. So yeah, I think that sort of brings me towards the end of my bit.